लेट्स एंड दिस। अमोल को उठाओ कोई फोन करके यार। मैं उधर हूँ। हाँ तो कट इसको रिकॉर्डिंग को सेव कर लेना। ओके चलो, हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक। थैंक यू ऑल फॉर गिविंग लिटिल बिट ऑफ लव टू आवर चैनल इन द लास्ट वीडियो। बड़ा मजा आया। काफी लोगों ने बोला कि हमारा जो नाम है स्पोर्ट्स कोटा की, जो स्पेलिंग है कोटा की, वो गलत है। तो ये हमारे स्पोर्ट्स कोटा एडिटर वालों के साथ ऐसे ही होता है। अगर हमारी स्पेलिंग सही होती तो हम स्पोर्ट्स कोटा से थोड़ा ना होते, Exactly. है ना। It was done हमारे purposely. हम तो एडिटर देख रहे थे कि असली हमारा फैन बेस कौन सा है, ठीक है ना। वो जिसने बोला ना स्पेलिंग गलत है उसको तो वहीं से वो कर दे ब्लॉक। मेरी मॉम ने बोला था एक्चुअली। तो हमारे एडिटर की गलती होगी, पर कोई बात नहीं। वेलकम बैक। हमने लास्ट टाइम कहा था कि हम लोग काफी अलग अलग स्पोर्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। एक मिनट किसी और पे मत डालिए। हमारा एडिटर भी तू ही है, ठीक है। तेरी गलती है। तूने कहा था तेरा प्रोडक्शन है, तूने माइक मंगवाया है, सब बड़े कुछ तो किया हमें है। दोनों। मैं मना नहीं कर रहा। हाँ, मैं मना नहीं कर रहा। मैं बोल रहा हूँ ये हाँ। हम सबकी कलेक्टिव गलती है। नहीं 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 नहीं, कलेक्टिव गलती नहीं है। वरुण, इनफ ऑफ दिस। आई एम इन द क्लियर। तो मेरी गलती नहीं है, बाकी तुम लोग आपस में बांट लो जो भी सीन है, ठीक है। गलती हरमान, मेरी थी, गलती मेरी थी। छोटे Yes. सहले सहले। आज हम लोग बात करने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं खो अबाउट, से नहीं। यस, काश। पर हम लोग शुरुआत करने वाले हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप से। मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ। मुझे क्रिकेट के बारे में सब पता है। इसलिए मैं आज उसके बारे में बात नहीं करूंगा। बचपन में लोग क्रिकेट खेलते थे तो वरुण को यूज करते थे एज द विकेट्स। फिर ये ज्यादा लंबा हो गया तो कहते वो जो नहीं होता सामने जो होता है कि थोड़ा इधर आजा धूप आ रही है, वो कटर पीछे से कटर। बॉल नहीं दिख रही, साइड स्क्रीन, साइड स्क्रीन। साइड स्क्रीन। तो ये साइड स्क्रीन है, इसको कुछ नहीं आता भैया क्रिकेट में। नहीं, पर मुझे एक चीज आती है, इंडिया ये करना आता है मुझे, तो फिर मैं काफी बड़ा यस, क्रिकेट का फैन हूँ। सचिन सचिन। सचिन टिक टिक टिक। हरमन हरमन और मैं सुपर बोल गए थे February 2020, जस्ट बिफोर कोविड इट बिकम द होल थिंग इन मायामी। वहां पे मायामी में सुपर बोल चल रहा है और हम 3-4 इंडियंस थे एक साथ, और हम लोगों ने वहां पे चैंटिंग शुरू कर दी, सचिन सचिन। बिकॉज एज इंडियंस अगर आप स्टेडियम में हो तो आप क्या करोगे, यही करोगे। What do you think? What's the highlight of the Indian cricket team this year? Many things, yeah. First of all, it just seems कि जब 1983 का वर्ल्ड कप जीते थे, it was an uplifting thing for the whole nation. It was not just कि sports खेले. Then the 2020 World Cup kind of showed the image of India, the youth of India, the new young India. Be it Yuvraj 6 6s, be it just like this team, young, athletic New cricket captain Mahendra Singh Dhoni at that time. Mahendra Singh Dhoni, Captain Cool. So in 2011, when we won the World Cup, it was like it was ripe. It was ripe कि यार ये लोग इंडिया की जो क्रिकेट है कमाल की है. You know, one of the fastest growing economies, all of that. So it represented how India was doing. Yeah. And it was a very important World Cup because जो भी आप जीते हो, but also for Sachin Tendulkar. उसके बाद वो खेलते नहीं अगला वाला World Cup 100%, right? And for a man who's known as the greatest batsman ever to not have a World Cup under his belt, having all the records, it's just like वो कहानी खत्म नहीं हुई. Like Messi winning the World Cup, Yeah. right? And Ronaldo not winning it. So yeah, so that happened for Sachin. It was very special. But I think again the timing is ripe. बीच में एक दो और हो गए हैं, उसमें भी we're always touted to be the best team generally now in the last 15-20 years. It's time for us to win again. There's a new, like there's a Virat Kohli, there's a Rohit Sharma, there is Indian pace attack जो बातें ही नहीं होती थी पहले. Pace attack हमारा, there's a kulcha in there, there is like इस टीम का जो मोमेंटम बना है before, during the World Cup till now, seems like this should end up in India winning. वो जनरली ना वर्ल्ड कप, है ना, वर्ल्ड कप के बीच में हर एक वो शुरू में एक आधी ऐसी गेम होती थी जहाँ पे इंडिया हार जाता था, और हम हमेशा ही बोलते थे कि शुरू में नहीं भाई, हमारी बीच वर्ल्ड में कप में परफॉर्मेंसेस हमेशा अनइवन रहती थी. एक जगह ऐसा होता जहाँ पे हार जाता था एंड यू लाइक ओ मैन हार गए, अभी क्या होगा, लेकिन अभी बचे हुए तो एक लास्ट मैच में जीतना ही पड़ता था ताकि क्वालिफाई करेंगे. इसमें भी से वो हुआ नहीं है. सो आई एम ओनली स्कैर्ड ऑफ कहीं ये बिल्कुल ना हार के एक दिन जो बैड डे होगा ना, वो नॉकआउट स्टेज पे ना हो. वो बैड डे अभी कहीं हो जाए तो चलेगा मेरे लिए. दैट्स द ओनली थिंग आई हैव टू से टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट. बट विराट कोहली बैटिंग,
रोहित शर्मा बैटिंग, कि कभी ये नहीं चल रहा तो केएल राहुल। हमारा ये है कि इस बार ऐसा नहीं कि एक साथ सारे नहीं चले। एंड द लास्ट मैच दैट हैपेंड विद इंग्लैंड वाज द टेस्टमेंट की 239 229 ही बनाया आपने, और अब क्या करोगे, और उसमें बॉलर्स ने 100 रन से जिता दिया। सो I'm very happy with the progress of India so far. I have another team that I want to talk about, but before let's find out कि हरमन का क्या मन कर रहा है इसके बारे में, So वर्ल्ड cricket कप को। for me was kind of the first love. Like Rannvijay, everybody knows basketball was his thing from the day he was born. For me, I think cricket was the first priority growing up, and then I fell in love with basketball as well. I think I want to continue on the fact that Jasprit Bumrah, Mohammad Shami, Kuldeep, Umran Akmal, and Mohammad Siraj, and the one guy who I think is the X factor for India is Ravindra Jadeja. I mean, these guys have actually enabled the team to be a wholesome team. We always were known as a batting team. You know, we were always considered a very strong batting lineup. The bowling lineup is actually what people have been completely scared of. Our first few overs, power play bowling has been the best in the World Cup so far in terms of runs given and in terms of wickets taken. Our middle overs, which is considered 20 to 40 overs, you know, that's where the 50-over game is very different. So you have to build the innings in the middle. शुरू में मारते हैं, एंड में मारते हैं, बीच में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें जो कुलदीप और जडेजा ने किया है, 10-10 ओवर जो फेंकते हैं 5 मिनट के अंदर, that has been a game changer because we got important wickets at the right time. We've broken big partnerships throughout this World Cup. And it's the first time in my existence. I was born in 1998, but I remember World Cup, you know, late 90s, 1988 brother, I said 1988. 98 सुनाई दिया। 1988. And I this mean, you is the look like first you were World born in 98 brother, ऐसी बात नहीं है। Yeah. आदिल क्या मेंटेन किया सर। ये पहला वर्ल्ड कप है जहां पे मेरे को ऐसा लग रहा है वी आर लाइक द ऑस्ट्रेलिया ग्रोइंग अप. You know, when हाँ Australia used to come in the World Cup, you were just scared because scared those यार. guys come into form during the World Cup. This We, World Cup, India is the team to beat, India right? is the best team by a mile. But having said at the same time, because everybody's watching the World Cup, they're very well aware. We are on top of the table with 6 wins. We haven't lost a game so far. And we got 3 more games left. उसमें से एक Netherlands के साथ है, which is considered an easy one. The 2 other games will be New Zealand and South Africa, which are in the top 4. So these 2 games will also define where India will actually land up in the semi-finals. Because competition hoga eventually between India, New Zealand, South Africa, maybe Australia, or maybe there'll be a jump in one of the middle segment teams. But right now, I also want to give a huge shout out to Afghanistan for having Afghanistan, man, that's 3 the wins in a World Cup. and That's huge. bhai, That's like Senegal in the football World Cup, you know, back in the day, bhai, reaching the semi-final. that's the So, other team that I want to talk about. We'll come back to Varun. that, but Yeah. जैसे you said that India is a team to beat, yeah. and India has been on a winning streak. Do you think that Asia Cup has a important role to play in the winnings right now? यार मैं बताता हूँ सबसे जरूरी चीज क्या है, हम अपने देश में खेल रहे हैं. यहाँ पे तो हमें आता है खेलना. यहाँ की इफ यू सी द ग्राउंड एंड पिचेस दे आर नाउ वर्ल्ड क्लास. अगर यहाँ नहीं जीते तो सबसे ज्यादा बेइज्जती होती है. दैट्स द ट्रूथ. अगर हम जाके ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में कहीं सेमीफाइनल में हारते हैं, फाइनल में हारते हैं, फिर भी थोड़ी इज्जत होती है. यहाँ पे हारना मतलब यू कांट लूज क्रिकेट इन योर होम ग्राउंड मैन. दैट्स द गोल्डन रूल ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप. सब लोग जीतते हैं अपने घर पे. इंग्लैंड जीती अपने घर पे, ऑस्ट्रेलिया तो हर जगह जीत जाती है. बट इंडिया ऑल्सो वन इन इंडिया इन 2011. Because you know the pitches, you know the environment, you know where to pick batting first, or you want to bowl first, you want to chase on this ground. You know, in Bangalore, you know, have a high scoring game. So you know the ground better than everything. And home ground advantage is huge in cricket. Yeah, but knowing the pitches and all, though, I think all players आजकल world level पे जो है वो सब IPL खेलते हैं. They all know Indian pitches because India is the number 1 country to play cricket in. So that's not a advantage कि आपको मौसम पता है, ये पता है. But yeah, we are 80,000 लोग आपके लिए चेयर कर रहे हैं, yes. दूसरों So के लिए the 10,000 लोग आते home हैं. crowd, especially Indian home crowd, is the actual key. Yeah. Because first of all, this crowd, मतलब Indian support even in an Australian cricket stadium is not equal to like a New Zealand or any other country playing anywhere, right? Indian supporters show up, man. They show up in any part of the world. India में तो मतलब influencers और actors के फोन आ रहे हैं कि भैया एक वर्ल्ड कप की टिकट की करवा दो. मतलब पता लग गया सबको कि ये कितना महत्वपूर्ण और कितना इंपॉर्टेंट है. टॉकिंग अबाउट अफगानिस्तान, Yes. the victory against England
you know, England's not doing well in this World Cup. Doesn't matter. They are the ex-champions and of World Cup. And for Afghanistan to go and beat them in the fashion that they did, 49th over, ऐसा कुछ था ना? 49th over. 86 to 86 मार दी. Was unbelievable, and I for felt the loss of 2 wickets, I think. I felt connected to them because according to me, the first country that I like to support after India is Pakistan because they were part of us. And then in extension, Afghanistan, especially against the UK. I mean, because we are history buffs, we are from an army background, all three of us. I don't have, like when the UK loses or dugna lagan, meri lagan, main jal jata hun. So even when Scotland defeated UK back in 2011, in England in 2011, I was rooting for Scotland. I don't have a India-Pakistan. Pakistan is not my biggest thing. England needs to lose, and Afghanistan or Pakistan or India beating, maza aa gaya. So that's one thing. But they have not won. It was not a fluke game. तीन जीत चुके हैं अफगानिस्तान. श्रीलंका को हराया और पाकिस्तान को हराया. Top cricketing nations. पाकिस्तान को हराया है. हरा दिया. इन श्रीलंका को हराया है. श्रीलंका को भी हरा दिया. और इंग्लैंड को हराया. और इंग्लैंड को हराया है. टॉप क्रिकेटिंग नेशंस, वर्ल्ड कप जीते हुए नेशंस हैं ये, जिसको अब सोचो एशिया कप में अफगानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान और इंडिया. क्या कमाल का, मतलब वेरी गुड, प्राउड ऑफ इट. So the rise of a new South Asian team, you know, South Asian team, Afghanistan. ब्रो, इंडिया में क्या चल रहा है अभी ये, मतलब ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप cafes do well, restaurants do well, लोगों के plans बनते हैं, स्टेडियम के आसपास जिस सिटी में होता है वहां पे कार्निवल टाइप फीलिंग होता है. आज जैसे क्रिकेट फैन हर जगह पहुंचे होते हैं. It's our version of a Taylor Swift concert. Yeah. Oh my God. The economy is booming in India because of the World Cup. It is booming. And you feel the unity, like साथ में आके ना, मतलब सब लोग आके देख रहे हैं मैचेस, फन है, मजेदार है. यार बड़ी, अगर तू देखे तो हमने भी, तूने भी ब्लू पहना हुआ है, मैंने भी कहीं ना कहीं ब्लू पहना हुआ है. पीछे हरमन तो रॉयल ब्लड है ब्रो, ब्लू ब्लड है आजकल. India obviously is topping the table right now. Who do you think will be in the top 4 apart from India? India तो है ही. Harman? As of now, New Zealand, South Africa, Australia is the most tricky team, man. They start playing really well in the World Cup. वो पहला गेम बहुत बुरी तरह से हारे थे हमसे, उसके 4 जीत गए वो, तो they are with 8 points. So Australia is always a team that you can't rule out of the competition. मुझे लगता है इन चारों के बीच में है. I would love to see a surprise like Afghanistan or Pakistan jump in, but as of now it's quite clear. Can I tell you the very cool thing that I can see in these top 4 teams? That cricket has become very, very athletic. Okay. Yeah. South Africans were the first team, Australians and New Zealand. These 3 countries have freak athletes जो क्रिकेट भी खेलते हैं, तो उनकी टीम में होते हैं. वैसे अदरवाइज लाइक एबी डिविलियर्स, हर्षल हरमन गिब्स, ये लोग ऑस्ट्रेलियन सब बहुत तगड़े लोग होते हैं, ठीक है. व्हिच मींस कि दे हैव लाइक मैच विनर्स इन देयर टीम्स, जो एक ही बंदा मैच जिता सकता है. एक दिन उनका कोई बैट्समैन चल गया या बॉलर चल गया तो वो पूरे 4-5 विकेट ले लेंगे या 150 रन मार देंगे 50 बॉलों में, राइट. एंड टू सी इंडिया डोमिनेटिंग is not just that we are good in cricket, हमारा skill अच्छा है, हमारे wrist कलाई से खेलते हैं, buddy. Our cricketers are top notch world athletes. Fielding, bowling, the competition is between the other genetic freaks like the Australians, the New Zealanders and South Africans, and I'm very proud to say that this is the competition because cricket के ऊपर एक ही वो होता था वर्ल्ड में कि हाँ एथलेटिक स्पोर्ट नहीं है. अब मतलब विराट कोहली जैसे अमेजिंग सुपरस्टार्स की वजह से वो कह रहे हैं कि भैया हम तो ओलंपिक्स में भी डालेंगे क्रिकेट को, हम तो ये भी करेंगे, उसका रीच इतना है, ये है वो है. तो क्रिकेट एज, I mean, India gaining respect is one thing, but cricket as a sport, because of the athleticism that everybody has brought towards it, and all the love that Indian fans have, and the fact that we have so many billions of people, it's amazing, and I'm very happy that. Yeah, but it is between these 4. Anybody, because athletes, इनमें से कोई भी जिस दिन चल जाए, वो semi-finals की बात है. And I have a feeling चकते इंडिया के क्लाइमैक्स की तरह विराट कोहली will score a 49th century in a semi-final or a final. Oh, that'll be Rohit epic. Sharma will win his first World Cup. और ये दोनों लेजेंड से सुपर लेजेंड स्टेटस में जाने वाले भाई साहब. तो इसके बाद फिर इनको बस ये पूछेंगे कि भैया रिटायरमेंट में आपको पॉलिटिक्स में जाना है या बीसीसीआई को किधर का क्या प्रेसिडेंट बनना है, प्राइम मिनिस्टर क्या करना, क्या है भैया, चीफ मिनिस्टर बनना, करना क्या, बिकॉज यही होगा.
I want you guys to predict the finals, the top two teams finals, only on Sports Quota Inc. India, New Finals. Zealand. India, New Zealand. India, New Finals, I think the way the movie is shaping up, a 20-year-old documentary shaping up, is India, India versus Australia, and Australia. India beats Zealand. Australia. Revenge of 2003. Ratatatata. I तो want India versus Pakistan. I'll be honest because I just want the तू तो interviews पिक्चर of the. देखने आया ना I हम want the डॉक्यूमेंट्री बना interviews रहे of the हैं हम Pakistani डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं cricketers. भैया हाँ हम Inshallah, रियलिज्म में है तू फिक्शनलिज्म में है